I'm sitting in a room in which the air conditioner is on. Okay. And I have a very small room. So I'm actually not feeling very hot. But suppose somebody comes to my room and says, "Ma'am, it's so hot today." Do you really think that I will be able to comment truly on his or her statement? Because I am sitting in an AC room which is cool enough, and the person who's coming from outside has felt the heat of the sun. So when that person from outside will come and tell me, "Ma'am, it's very hot today," I can, of course, say yes. In respect of that person's opinion, I can say, yes, yes, it is hot today. But do you think I will actually understand that person's condition? Do you think I will actually feel how much the sweat is in his body? How his shirt has got drenched in the sweat? His body odor which is coming out of the sweat, how much thirsty he must be feeling. His skin, his skin must be itchy and scaly because of the heat. Do you think I'll really be able to feel it? I can imagine, but I will not be able to feel. You understand what I'm trying to say? So this is what happens when the teachers are trying to teach something in the class. Suppose you are trying to teach first law of motion, second law of motion. You are trying to teach Pythagoras theorem is. You are trying to teach that, see, this is the electric bulb. Now suppose a child has never seen an electric bulb. These days already bulbs have become very rare. We have so many different kinds of fancy lighting systems, isn't it? Now आप कह रहे हो electric bulb was invented in the class, and the child has never seen a bulb. So do you think the child will be able to relate? Suppose you are talking about agriculture in the class, and you're saying the farmers work so hard, and this is the sowing of crops, the winnowing of crops, the harvesting of crops. Now for the children, winnowing, harvesting, sowing, reaping, they're all words. Are you getting my point? They're all words. The child is not able to relate with whatever you are speaking in the classroom. So what happens is, if I talk in terms of score, score is very much in these days as far as CBSE is concerned. So I would say there's a gap. There is a gap between the teacher and the taught's ideas. Maybe as a teacher, I have seen certain things. Maybe my children have not seen. Or it is also possible, many a times as a principal, I would tell you, this is my personal opinion, that I have felt many a times even the teachers have not experienced things which they are discussing in the classroom. The teacher has never tried to practically implement Newton's first law of motion or second law of motion or third law of motion, और वो क्लास में दुनिया भर के एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जिनको उन्होंने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. तो ये जो इसकी वजह से हो ये रहा है कि स्टूडेंट and the teachers, whatever the teacher is trying to deliver in the class, or rather you should say education and the student के बीच का gap बढ़ता जा रहा है. Because you cannot understand something which you have never experienced in life. अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैम मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आप समझेंगे मुझे कितना दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ मसाज करने पे कहाँ रिलैक्सेशन होती है, आप नहीं समझेंगे. तो वैसे ही टीचर्स, you are working very hard in the class, you are preparing your lessons, you are preparing your lesson plans, you are going to the class, you are giving an excellent lecture, you are doing practicals, you are showing videos, but what is happening? The children are not able to relate because they don't have experience. So today our session is on experiential learning, in which we will try to understand the meaning of experiential learning, the definition of experiential learning. Of course, I understand I'm a CBSE person, so I'll not ask you to memorize the definition, but I'll try to you to explain it. Principles of experiential learning, characteristics of experiential learning, and the cycle of experiential learning, which is very, very important. And finally, the most practical part will be the method of experiential learning. Suppose tomorrow you go to the class and you want to use whatever I have
डिलीवर्ड टुडे, उसको आप इंस्टेंटली यूज करना चाहते हो तो आप कैसे कल ही से अपने क्लास में उसको यूज कर सकते हैं. आई ट्राई टू गिव यू सम प्रैक्टिकल हिंट्स, बट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. और अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं वो क्लासिक स्टोरी दोहरा रही हूँ आपके सामने. मैं नहीं बोलूंगी स्टोरी को, मैं सिर्फ आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी और आपको ये समझना होगा कि अब आप ये समझिए, ये कहानी आप सबको पता है, द थर्स्टी क्रो, लेकिन इस कहानी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहाँ है वो आपको समझना होगा. ठीक है, और मैं सिर्फ आपको स्लाइड दिखाऊंगी, यू हैव टू रिलेट. इतना जो मैंने आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इंट्रोडक्शन दिया, अब आप रिलेट करिए कि ये जो क्रो है ये तो कभी आपके स्कूल में नहीं गया, इसने कभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ी, इसने कभी स्कूल का फी नहीं दिया, लेकिन ये एक ऐसा टीचर भी है और ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को पूरी तरीके से समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया. Am I right? Do you agree with me that the story of this thirsty crow story is a classic example of experiential learning? Now here what is the crow doing? The crow is picking up the pebbles and next step is he is putting it in the घड़ा. यही कर रहा है ना क्रो आपका. जहां भी आपको दिक्कत होगी काइंडली आप चैट बॉक्स पे बोलेंगे, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि आप कल स्कूल जब जाएं तो आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अप्लाई करके देखें कि मिताली मैम ने जितनी बातें बोली उसमें से कितना सही है कितना गलत है. दैट शुड बी डन, अदरवाइज दिस विल ओनली रिमेन वन मोर ट्रेनिंग एंड वन मोर सर्टिफिकेट इन योर डोजियर. अब आप देखो एक चीज, शायद जितने साइंस के टीचर्स होंगे यहाँ वो जरूर इस बात को समझे होंगे, एटलीस्ट साइंस के टीचर्स, बाकी लोगों ने भी समझा होगा, लेकिन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द साइंस टीचर्स दैट अगर ये क्रो पेबल्स उठा उठाकर पूरे घड़े को भर देता तो क्या वो पानी पी पाता? फॉर एग्जाम्पल इस कौवे ने क्या किया, इसने पेबल्स उठाया और उस घड़े में डाला ताकि वाटर लेवल कम्स अप. लेकिन अभी आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये क्रो पूरे घड़े को पेबल से भर देता तो क्या पानी पी पाता? ना दिस इज एक्सपीरियंस. उसने क्या किया आप देखो फिगर में भी, उसने कुछ कुछ पेबल्स उसमें डाले so that the water level rises and he can drink water very comfortably. If you can also try this experiment in your school, आप एक कोई भी ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी इतने नीचे है कि आप मुंह से नहीं पी पा रहे हो, आप चाहते हो लेवल ऊपर आए, तो आप उसमें कुछ भी डालिए. अगर आप पूरे ग्लास को पेबल से भर दीजिएगा, पत्थर से भर दीजिएगा, then you will not be able to drink. But if you fill that container to some extent with the pebbles, you will see the water level rising and you can drink. आजकल we also use this. आप इस example को देखें. Look at this. Now the crow is able to drink water very, very easily. Now you look at this. Now from the experience of the crow, एक बार जिस क्रो ने इतनी मेहनत की और पेबल्स उठा उठा कर डाला, फिर पूरा पेबल्स हो गया होगा तो कुछ पेबल्स निकाला होगा, फिर आधा लेवल तक इसका पेबल्स डालकर आराम से इसने पानी पिया. लेकिन अगर इस क्रो को दूसरे क्रो को समझाना होगा कि तुम्हें पानी कैसे मिलेगा, आई थिंक द क्रो कैन गिव दिस आइडिया. अरे यार, इंस्टेड ऑफ डूइंग इतनी मेहनत, इतना पेबल्स वेबल्स इकट्ठा करके डालने से अच्छा एक स्ट्रॉ लो और पानी पी लो. How does the crow say this? Because the crow has learned from his experience that if I use a straw like this, then I will be able to drink the water very, very easily. So, my friends, you must realize that experience holds a very, very important place in our life. और हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करा रहे हैं, आप वीडियो दिखा रहे हैं, आप कुछ भी करो, लेकिन इफ वी डोंट गिव आवर चिल्ड्रन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, then the children will not be able to go one step further. The crow had the experience that how can I bring the water level up? From his experience, what has the crow done? The crow has gone one step ahead. और उसने उसने ये डिसाइफर किया कि भैया पेबल्स की जगह स्ट्रॉ यूज करेंगे तो काम ज्यादा आसानी से हो जाएगा. सिमिलरली आप एज अ टीचर व्हाट कैन यू डू? यू कैन गिव योर चाइल्ड दैट एक्सपीरियंस, real life experience, and from that real life experience the child will learn to manipulate and go one step ahead. For example, today I am sitting in this AC room.
आखिर जिसने भी इस एसी को बनाया होगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसने गर्मी एक्सपीरियंस की होगी? फिर उसने सोचा होगा कि इस गर्मी से बचने के लिए कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए दैट वी डोंट फील सो हॉट। अगर उस इंसान ने गर्मी एक्सपीरियंस ही नहीं की होती तो आई एम श्योर वो एसी नहीं बनाता। Are you understanding what I'm trying to say? So, experience holds a very, very important place in education. And as the 21st century teachers, we must not stop our students from first hand experience. क्योंकि अगर आप आज के बच्चों को देखेंगे तो today the children don't know anything which which is not available in cities and towns. आप अपने बच्चों से पूछिए बेटा घास कैसा होता है, आप अपने बच्चों से पूछे आप धान देखा है आपने, आप अपने बच्चों से पूछे खेत में पानी देखा है, आप अपने बच्चों से पूछो कि आपने कभी झूला झूला है, आप अपने बच्चों से पूछो आपने कभी गिल्ली डंडा खेला है, तो चिल्ड्रन विल से नो 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 नो. So the list of no has become bigger and the list of yes has become very small. So आज के डेट में it's much more important to sort the method of experiential learning. So with this much of understanding, let's try to move a little further. So the definition says that experiential learning is a way of acquiring knowledge or skills through direct and keen observations, followed by analysis of what has been sensed and understood. अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, अगर हमारे इस ग्रुप में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आज भी फॉलो कर रहे हैं और करना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे इट इज रिटन हियर, इट इज अ वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल्स, नॉट ओनली नॉलेज इवन स्किल्स. मुझे याद आ रहा है, अभी तुरंत मुझे याद आया, इन द टेलीविजन एक एड आया करता था किसी एक वायर कंपनी का. देयर वाज अ लेडी जो बैठकर रोटी सेक रही है और बार बार हाथ से रोटी को पलट रही है, उसका हाथ जल जा रहा है. नाउ देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड जो बगल में बैठा हुआ और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी माँ का हाथ बार बार जल जा रहा है. सो व्हाट इज अ स्मॉल चाइल्ड डूइंग? आफ्टर सम अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो बच्चा जाता है और एक तार होता है वायर, उसको एक चिमटा का शेप देकर अपनी मम्मी को देता है. ही यूज दिस फॉर फ्लिपिंग द चपाती. डोंट यूज योर हैंड्स. And this is known as experiential learning. Now, the child is sitting in front of the mother and experiencing the pain that the mother is having. And thus, by observing, by experiencing, the child analyzes that my mother needs something through which she can flip the chapati and her hands will not be burned. So the child goes and invents something. This is not a discovery. This is that, the child has invented something. So this is the result of experiential learning. So until and unless you allow the child to experience, the child will not come up with solutions, with ideas, with inventions. Because हम जब तक experience नहीं करेंगे, हम observe नहीं करेंगे. Experience leads to observation and observation leads to analysis. आज अगर आपके घर में आप घर जाएं, आप लोग मोस्ट ऑफ यू हो सकता है घर पे हो, तो आप दिन भर काम करके स्कूल में घर गए हैं और घर में आपने जाकर देखा अरे यार आज तो मुझे 4 रोटी खानी थी, 3 ही रोटी बची है, 2 ही रोटी है, सबके खाने के बाद 2 ही रोटी बची मेरे साथ खाने को. तो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि 2 रोटी से मेरी भूख नहीं जा रही है, तब तो आप कल से नंबर ऑफ रोटीज को इंक्रीज करेंगे घर में. अगर आपको वो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, भूख की एक्सपीरियंस ही नहीं हुई, तो आप रोज गड़बड़ ही करेंगे. आप रोज आपके घर में आपका रोटी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत होगा. So please remember, my purpose of giving so many examples is to emphasize on the fact that experience leads to analysis, leads to observations, leads to discoveries, and leads to solutions. Okay, and experiences are retained in our mind. अगर मैं आपसे एक बात कहूं, एक और एग्जाम्पल छोटा सा देती हूं आपको. अगर मैं आपसे कहूं प्लीज क्लोज योर आईज ऑल ऑफ यू, और आप अपना वो दिन याद करिए, अपने स्कूल लाइफ का वो दिन याद करिए, द डे योर टीचर मेड यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड.
हो सकता है आपको अब उस टीचर का नाम नहीं याद हो सकता है आपको क्लास नहीं याद हो, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस जरूर याद होगा, आप तुरंत कहेंगे यस मैम आई रिमेंबर. Because when you experience happiness, when you experience pain, when you experience joy, when you experience heat, when you experience cold, that you remember. So that means if I can give experiential learning to my child's retention will also be very, very high. अभी ये डेफिनेशन आपको याद करने को कहो तो आप रटेंगे रटेंगे रटेंगे, फिर जब टेस्ट होंगी हो सकता है आप एक दो वर्ड मिस कर जाए. लेकिन अगर आपको इस डेफिनेशन का एक्सपीरियंस आपको दूं तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या है. यही पर्पस है मेरा इतने सारे एग्जांपल्स आपको देने का. देखिए, just what I was saying. Albert Einstein says the only source of knowledge is experience. You understand? You try to think about your great grandmother, your grandmother. Many of even our parents, many of us are first generation learners, maybe at our home. So क्या हमारे पेरेंट्स हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे सिखाते थे? हमारे दादा दादी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें कैसे सिखाते थे? इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज, इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग कैसे सिखाते थे? वो तो कॉलेज हमारे जैसे प्रोग्रेसिव स्कूल्स में भी गए भी नहीं होंगे. उनके पास इतनी डिग्रियां नहीं होंगी जितनी हमारे पास है. बट हाउ दे वर एबल टू डू सो मच, गिव अस सो मच ऑफ नॉलेज, शेयर सो मच experience with us, because they had experience, and their method of learning was through experience. उन्होंने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया, उससे कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया, उससे कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया, उससे कुछ सीखा. इस तरीके से धीरे 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 उनका नॉलेज बैंक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. और वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो उनके पास हुआ वो कभी वो भूले भी नहीं. They transferred it from one generation to the other generation. So please remember, if you have only knowledge which is not through experience, then it will be only temporary knowledge. Maybe after 1 year, after 2 years, maybe after 6 months, maybe after just giving the test, you'll forget. So please remember, हमारी सबकी जिंदगी में एक ही चीज होती है. मान लीजिए, ईश्वर न करे, मेरे घर में भी कोई बीमार हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आपके बगल में कोई और टीचर उसके घर में भी हो सकता है. लेकिन हम सबका रिएक्शन अलग होगा, हम सबका वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा, हम सबके एक्शंस अलग होंगे. अगर घर में कोई बीमार हो तो सबके एक्शंस अलग होंगे. हो सकता है मैं रोने लगूं, हो सकता है आप जो है तुरंत उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाए, हो सकता है अगला एक इंसान हो गया, नहीं मैम एक दिन वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, कल इसको ले जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो वी ऑल रिएक्ट डिफरेंटली, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन, but our actions, our reactions, our responses are all different. Okay, so please remember, what I experience and what you experience will be different, and therefore our knowledge bank will be different. That is the reason, friends, why experiential learning is considered to be such a huge approach. क्योंकि अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, वो एक ही चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन 40 अलग अलग थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं लर्निंग कितनी रिच होती है थ्रू एक्सपीरियंशियल learning. So please apply this method. Okay, so very, very important to understand these things. Now, some more definitions say this. These definitions I'm not giving you to learn. Please just try to understand experiential learning. Kolb says experiential learning is, there is so much on my screen. Experiential learning is a process by which the learner develops meaning and insight from engagement in direct experience. यानी अगर आप डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कहे व्हाट अ लवली सनी डे, और आप बच्चों को गार्डन में ले जाएं, स्कूल के ग्राउंड में ले जाएं, तो सनी डे इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट चाइल्ड. एक बच्चा हो सकता है कहेगा वाओ लुक एट द सन, it's so bright. कोई कहेगा my god, this so much of light causes a headache for me. कोई बच्चा कहेगा मैम because of the sun my hand is itching. कोई कहेगा मैम I'm feeling very thirsty. कोई कहेगा no ma'am I'm feeling so good, all my sweat and all they will evaporate because of the heat of the sun. So every child has a different feeling, a different reaction, a different way of doing things. Some of you are continuously requesting for annotation rights. I cannot give it. Vibha Singh ji, I think you pressed something. Please check.
Now, Carl Rogers says experiential learning is equivalent to personal change and growth. Yes, when I experience something, I have my own growth. I have my own ideas. जब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ किसी चीज को तो मैं अपने तरीके से सोचती हूँ. क्या आप में से किसी भी इंसान, आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, क्या आप में से कोई ये कह सकता है कि जब आप मिर्ची खाते हैं बहुत ज्यादा तो आप कैसा फील करते हैं? चार लोग अगर मैं सेम मिर्ची चारों को दे दूं, सेम टाइप की मिर्ची, और उनसे उनसे कहो ये मिर्ची खाने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, यू नो ऑल फोर एक्सपीरियंसेस विल बी डिफरेंट. कोई कहेगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आई वाज फीलिंग गुड, स्पाइसी, हॉट. कोई कहेगा मैम मेरी जीभ जल रही थी. कोई कहेगा मैम मेरे लिप्स रेड हो गए. कोई कहेगा मैम मुझे हिचकी आ रही थी. कोई कहेगा मैम मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही थी. एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट. So when tomorrow I will give the children to write a note when you ate a lot of mirchi. Suppose I give this topic to the children to write in my English class. Everybody will write something different which they have experienced when they tasted the mirchi. Are you getting my point? What is experiential learning? Now, next, experiential learning can be defined as individuals learning through exploring, experiencing, creating, discovering, relating, and interacting with the world around them. So it's my personal experience. No two people have the same experience. Please remember this. So no two children in your class will learn the same thing. So that means we are moving towards NEP, which says no more rote learning. Let the children learn from their own experiences. So that means two children, when exposed to the same condition, will have different learning. And that is the beauty of experiential learning. Okay. Maybe the basic principle will be the same, but the way they look into it is different. So I hope all of you will agree by now. We can conclude, till here, we can conclude by saying action without study is fatal and study without action is futile. Futile means useless. So if you go on teaching the child in the class, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छे नोट्स लिखवाए, आपकी कॉपी वर्क बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपके बच्चे पर इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. बच्चे ने सारा कुछ पढ़ लिया. बच्चे ने डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, डेजर्ट में कैमल्स होते हैं, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट में गर्मी होती है, डेजर्ट में ऐसे कपड़े पहनते हैं, डेजर्ट में वैसे, सब कुछ अपने बच्चे को सिखा दिया, लेकिन बच्चा कभी डेजर्ट एक्सपीरियंस ही नहीं किया. तो दिस काइंड ऑफ स्टडी विदाउट एनी एक्शन इज considered to be futile. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये सजेस्ट करने कि आप सारे बच्चों को थार डेजर्ट ले जाओ, लेकिन आप डेजर्ट का एक्सपीरियंस दे सकते हैं. वो आप कैसे देंगे? दैट एवरी टीचर विल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग दैट experience. We'll discuss some methods also towards the end of the session. Now, what are the characteristics of experiential learning? Experiential learning is direct participation of the learner. I'm sorry that R is missing here. Kindly ignore. Direct participation of the learner. It is self-initiated. मान लीजिए मुझे आप बारिश, रेनी डे है और आपने मुझे बारिश देखने के लिए आप कहीं ले गए, क्योंकि भीगने तो हम नहीं दे सकते स्कूल में, लेकिन हम बारिश देखने के लिए बच्चे को कहीं ले गए. तो मैं ए हूं, बगल में बी है, बगल में सी है. ए बारिश को देखकर जो सोचेगा और बी बारिश को देखकर जो सोचेगा और सी बारिश को देखकर जो सोचेगा डिफरेंट हो सकता है. So that learning is self-initiated. It is active and dynamic. एक्टिव मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड डायनामिक इज इट कीप ऑन चेंजिंग. मैं सोच रही हूँ, अभी ये सोच रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद सोचू कि नहीं 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 बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो मेरा रोड में पानी भर जाएगा. पहले हो सकता है बहुत अच्छा लगे, फिर बाद में हो सकता है मैं ऐसा सोचने लगूं. इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड. इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू क्रिएट नॉलेज. It involves students' choice. It is self-evaluative. It gives real-world experience and it helps in learning the present problem. That means if we can conclude from here that experiential learning is a student-centered method of learning. The student is at the center, and whatever learning is happening, it is happening around the child. The teacher is not giving a lecture. The teacher is not giving the lecture. The teacher has just made the children stand somewhere from where they can directly see the rain falling.
And now the teacher asks a question. Can you see the raindrops? What is the color of the raindrop? Now the child is seeing the rainfall. The child can answer. Okay, what will happen if it rains continuously for 2 hours? Okay, what do you think? If this rain falls on you, what will happen to you? So the teacher is directly chasing the child's experiences. Are you understanding? So these are the characteristics of experiential learning. Now, is experiential learning effective or not effective? So children learn best from experiences with natural occurrences and with concrete objects in the environment. Are you understanding? This means आप आप बच्चे को कौन सी एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा काम आती है बच्चे को? नेचुरल अकरेंसेस. और आपके स्कूल के आसपास आप देखो, आपके क्लासरूम में देखो. फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को क्यूबॉइड पढ़ाना है आपको, तो आप अपने क्लासरूम के डस्टर को उठाकर दिखा सकते हो that this is a cuboid, and let the child touch that cuboid, let the child feel that cuboid, let the child play with that cuboid and try to understand what a cuboid is. आप बोर्ड पे कितना भी क्यूबॉइड बना दो, हो सकता है the next day you show the duster to the child and say, beta, what shape is this? Maybe the child will not be able to say. Are you getting my point? This is the meaning of experiential learning. Experiences gained through interactions with other individuals also promote learning. For example, if you make partners, okay, two of them talk to each other, and 5 questions you give them, I want the answers. Now, suppose I am with my partner and I ask, today what have you brought for lunch? Now my partner says, today my mother was not very well, so she has given me only bread. Somebody is saying my voice is not audible. Am I audible, Himanshu sir? Am I audible? Someone just chatted. Absolutely. Absolutely. Okay. So I request that sir to please check in the network connections. So are you understanding? Now suppose उसने बोला कि my mother was not well today, so I brought only bread. तो मेरा क्या एक्सपीरियंस हो सकता है आप बताओ? So many types of experience. मैं सोच सकती हूँ, अरे मैं कितनी लकी हूँ, मेरी मम्मी आज हेल्दी है, स्वस्थ है, और उसने मुझे इतना अच्छा पूरी भुजिया और इतना अच्छा चीज, इतना अच्छा फ्रूट दिया है लंच में. आई एम सो लकी गॉड, थैंक यू गॉड. मे बी मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है. या मे बी मैं ऐसा भी तो सोच सकती हूँ, माई गॉड दिस चाइल्ड इज सो अनलकी दैट इसकी मम्मी क्यों बीमार है, चलो इसके साथ मैं अपना लंच शेयर करूंगी. तो मेरे अंदर शेयरिंग की भावना जग रही है. सो एक ही एक्सपीरियंस, एक ही हालात के बच्चों पर अलग अलग असर होता है, और उन सारे असर की वजह से मेरे बच्चे में लर्निंग प्रमोट होती है. नेक्स्ट, such accumulated experiences are further examined and evaluated by themselves. इसका मतलब क्या? The learning of the child is a self-guided process. Now the child is not dependent on you for learning. Maybe the child will go home and say, Mama, पता है मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसकी मम्मी ना आज बहुत बीमार है, इसने ना वो सिर्फ ब्रेड लाई थी. सो मम्मा आई वांट टू थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा लंच दिया. क्या हुई? क्या लर्निंग हुई बच्चे की? द चाइल्ड हैज लर्न द वैल्यू ऑफ gratitude. The child has learned the value of parents. The child has learned to give respect to whatever the child has got in the life. इतनी सारी learning हो गई without the teacher teaching anything. सिर्फ टीचर ने क्या किया? टीचर ने पार्टनर बना दिया और कहा कि भैया ये 5 सवाल के जवाब आप अपने पार्टनर से पूछ के बताओ. The teacher has not done any teaching, but the teaching has happened on its own. Are you understanding the meaning of experiential learning? Wherever it's not clear, please let me know. Now, experiential learning requires that a child should be personally involved in the learning task. ये तो आप लोग समझ गए होंगे. आप बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे रहे हैं. The knowledge or information must be discovered by the child herself or himself. The objectives of the learning activity must be clearly understood. Now, Harish ji, you need to check your network. I am audible as far as the others are saying. Now, मैं आपको एक छोटा सा बहुत स्वीट सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर आप किसी बच्चे से कहिएगा, पता है तुम्हें कैडबरी डेयरी मिल्क ये कैसा होता है? तो आपको बच्चे कहेंगे, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जानेंगे भाई कैसा होता है. हो सकता है कोई दो चार बच्चे ऐसे होते जो कहेंगे कि नहीं मैम, आई डोंट नो कैडबरी डेयरी मिल्क कैसा होता है. तो आप कहेंगे, ये पता है ये ना बहुत मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है. तो डू यू थिंक द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि कैडबरीज का टेस्ट कैसा होता है?
मे बी द चाइल्ड विल थिंक हाँ ये मीठा होता है, मैंने कुछ मीठा खाया है घर में, हो सकता है वैसा ही होता हो सकता है बच्चा ये सोचे कि कैडबरी डेयरी मिल्क का टेस्ट अनरसा जैसा होता है, खाजा जैसा होता है, सोच सकता है ना बच्चा, ठेकुआ जैसा होता है। लेकिन कैडबरी का ही टेस्ट कैसा होता है कैसे बच्चा समझेगा जब तक आप उसको टेस्ट नहीं कराओगे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक वो बच्चा उस सिचुएशन में एक्सपोज नहीं होगा, उसको डायरेक्टली फील नहीं करेगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं करेगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करेगा, until and unless learning somewhere is incomplete. And teachers, the day you understand this, that without exposure learning is incomplete, that day you will realize that experiential learning is so important, and that day maybe you will find out small things for the child to experience. लेकिन जब भी आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करो तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखो, द ऑब्जेक्टिव्स, दैट मींस द लर्निंग आउटकम शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता ही नहीं, आप बच्चों को बारिश में ले जाकर खड़ा कर दिए, आपको पता ही नहीं कि आप सिखाना क्या चाहते हो, क्यों बच्चे को ले जाकर बारिश में खड़ा किया, वाई डिड यू मेक द चाइल्ड स्टैंड इन द सन, सॉरी इन द रेन। ऐसे मैम एक्चुअली मैं फील कराना चाह रही थी कि बारिश कैसी होती है। यार बारिश कैसी होती है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये बच्चे को जब आप बारिश के पास लेकर गए तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए। Maybe you wanted the children to understand the color of rain. Maybe you wanted the children to understand how do raindrops look like. Maybe you wanted the children to understand that when it rains, how does it look? Maybe you wanted the children to see a rainbow in the sky after the rainfall. I don't know. Whatever your learning outcome is, that should be very, very clear. अभी मिताली मैम ने बोला एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना चाहिए, तो कल आप बच्चों को ले जाकर धूप में खड़ा कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। You must be having your learning outcomes very, very clear. कि today I'm taking my children to our ground for 1, 2, 3 these things. अगर ग्राउंड में ले जाए बिना भी ये काम हो सकता है in the classroom, please go ahead. जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको क्यूबॉइड पढ़ाना है, अगर आपको शेप्स पढ़ाना है, there are so many things available in the classroom. Give that to the children. Okay. Next. Next is, what are the suggestions? Involve students in the planning. Allow sufficient time. Yes, there is one question that might come from your side. Experiential learning needs a little bit of time. So that time you should have, or rather I would always say, teachers always complain they don't have time, they're in a hurry to complete the curriculum. But I would say that, which I always suggest to my teachers also, that if you can teach something very well, with the children have absorbed completely, then I think you can be a little fast in the other parts of the curriculum. अगर आपने, जैसे हमारे हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए, यानी अगर आपने कुछ बेसिक चीजें बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपने डिफरेंट मेथड्स यूज करके समझाया, वन ऑफ विच कुड बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देन आई थिंक योर करिकुलम विल मूव फास्टर because the children have understood certain things very well and their base is very good, their foundation is very weak and good, and they can go ahead. Many of you are complaining that I'm not audible. Imanshu sir, 3/4 people have started complaining that I'm not audible. Absolutely audible, ma'am. Those who are saying they might have some internet issues or something. So I need not worry, no? No, no, no. Okay, okay. Absolutely audible. Thank you so Perfect. much. Thank you. Now, please, whenever you are trying experiential learning, try to give some positive feelings. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा भी तो दे सकती थी, मान लीजिए मेरे घर में किसी की डेथ हो जाए, तो ऐसी नेगेटिव चीजें नहीं यूज करनी है, बच्चों के साथ ट्राई टू गिव द पॉजिटिव ऑरा एज मच एज पॉसिबल. Communicate their experience to others. Yes, that's very important, that whatever the child is experiencing, the child should be able to communicate, because one child's experience could be a learning for so many other children. मैंने आपको शुरू में ही बताया, the same situation can give different learning experiences to different children, and when all of them share their learning experiences, you know, you have a library of learning. You have so much to learn from the same situation, you know. Have adequate supply of materials and tools available in order to facilitate simple investigation and instant explorations in the environment. Yes, you must
plan your experiential learning class. You must have enough things to carry out the experiential learning in the classroom. I hope this is very clear to all of you. And whenever you're doing experiential learning, please आप बच्चों को describe करो event क्या हम लोग करने जा रहे हैं, इसके outcomes क्या हैं, ये fail या success हो सकता है, दोनों हो सकता है, कैसे होगा, and the value of every event. Okay, it's very very important. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मेरे जहन में आया तुरंत. You know, all of you, I'm sure each school must be doing a farewell, maybe for class 10th or class 12, whatsoever. Good luck party for class 10th, farewell for class 12. Now you tell me, when you're doing a farewell, there can be two ways of doing the farewell. पहला, भाई आपने प्लान आउट कर दिया, एक गाना होगा, एक डांस होगा, एक ग्रुप सॉन्ग होगा, ये होगा, एक नाटक होगा, ये खिलाएंगे, इतना कलेक्शन करेंगे बच्चों से, ये गिफ्ट होगा, ये खाना पीना होगा, ओवर, डेट फाइनल, ओवर. अब now you imagine, now I'm giving you some examples, just some suggestions. You know, I'm nobody to suggest you something forever, but what is coming to my mind, I'm just sharing with you. Suppose now you want to make this farewell and experiential learning for the children. What can you do? Normally, what I do in my school is, I always tell the children that suppose there are 40 students in one section, there are 80 students in two sections, maybe two sections of 9 want to give farewell to 10. I tell them, whatever number you are, first you divide yourself into different groups. One will be decoration group, one will be food committee, one will be discipline committee, one will be program committee, one will be gift committee, one will be invitation, whatsoever. Divide yourself into different groups. क्या क्या काम होंगे आप सोचो एक फेयरवेल में, और अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करो. Every group will prepare their own budget कि भाई मेरे इस फेयरवेल को करने में कितना बजट होगा. आप सारे बजट को कोई एक जगह क्यूमुलेटिव करो और एक फाइनल बजट निकालो. उस फाइनल बजट के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करके हर बच्चे को कितना कंट्रीब्यूट करना है, फॉर एग्जांपल स्कूल को कितना कंट्रीब्यूट करना है, उसके बाद आप उस बजट के हिसाब से हर ग्रुप अपना अपना काम करो. प्रोग्राम ग्रुप डिसाइड करेगा मुझे क्या प्रोग्राम करना है, खाने पीने का ग्रुप विल डिसाइड कितने बजट में मैं क्या कर सकता हूं, तो दूसरा ग्रुप डिसाइड करेगा. नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ द चिल्ड्रन नो हाउ टू कंडक्ट अ प्रोग्राम. So what have I done? I have given them the real hand exposure, experience of conducting a program. Maybe this was a small program farewell. Tomorrow, यही लड़कियां होंगी मेरे स्कूल की, जब इनको अपने घर में कोई पार्टी करनी होगी, इनको कहीं भी कुछ ऑर्गेनाइज करना होगा, they can easily do it because they have the experience. So please teachers, try to understand, experiential learning सिखाने के लिए आपको अपने करिकुलम से अलग हटके कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालकर फील्ड में ही हमेशा ले जाकर या डेजर्ट में ले जाकर या माउंटेन में ले जाने की जरूरत नहीं है. Experiential learning can be done through day-to-day activities of your school. Everything can be converted into experiential learning for the kids. But it needs, as I already said, it needs planning. It needs that learning outcomes must be finalized. It needs involvement of the children. You have to understand this can be a failure or this could be a success. अगर success करना है तो क्या-क्या steps मुझे लेने होंगे, कहीं ये failure नहीं हो जाए. Are you understanding? So this is, you know, experiential learning. अभी मैंने आपको जो भी समझाया उसका एक cycle समझिए आप. First of all, experience देना होगा आपको, concrete experience. उस एक्सपीरियंस के बाद मे बी आफ्टर द फेयरवेल आई विल हैव अ मीटिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड डिस्कस, come on, let's discuss what were the good things that happened, where all we have failed in conducting the farewell for class 10. कहाँ दिक्कत हुई, मैम डेकोरेशन कमेटी का बजट इतना बढ़ गया, मैम वो जो फूड पैकेट था उसमें ये नहीं देना चाहिए था, उसकी जगह ये होता तो वो ज्यादा हेल्दी होता और ज्यादा देर तक अच्छा रहता. मे बी दिस कमेंट्स कम, मे बी प्रोग्राम मैम थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए डिस्पर्सल लेट हो गया इसलिए ये कंप्लेन हो, व्हाटएवर. दे आर नाउ रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट दैट व्हाट वेंट रॉन्ग and what was good. Now what we do an abstract conceptualization. तो हम conclude करेंगे इसको, कैसे conclude करें, अच्छा इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ गलती की, next time we have to take care, and then again in some other program we can implement it. So these are the stages of experiential learning. Please remember, experiential learning हमने बच्चे को दे दिया, काम खत्म हो गया, no. इसके बाद reflection, then again conceptualization, and again you have to implement it.
again implemented, and then again you try to learn what went wrong. So in a one word we can say it's a continuous process, continuous learning process, which your new education policy also says. अगर आप अपने assessment policies को as per NEP देखेंगे, pre draft वाले NEP में, तो आपको यही मिलेगा that assessment is a continuous process, and experiential learning actually promotes this. Are you understanding? Experiential learning is promoting this. So please try to understand that it will continue, it will continue, it will continue. It's not going to stop. Okay. Next. So what is a cycle of experiential learning, my dear friend? Thank you, Padmaji. What is a cycle of experiential learning? Experiential learning means an activity occurs. You can take a screenshot of this. An activity occurs. Reactions and observations are shared, because I told you every child has a different observation. Every child has a different perception. पैटर्न्स एंड डायनामिक्स आर डिटरमाइंड. अच्छा, एनालिसिस करेंगे, अच्छा ये करने से ये होता, वो करने से वो होता, वो नहीं किया हमने इसलिए ये छूट गया, ये किया तो देखो ये अच्छी चीज हुई. उसके बाद हम जब ये डिसाइड करेंगे तो कहेंगे अच्छा अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, अगली बार हम वो करेंगे, या इसको नहीं करेंगे, या इसको और करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Then what happens? Then you apply whatever analysis you have done, you apply it, and again you do experiential learning. So this is the cycle of experiential learning. Anyone has any problem till here, you can please raise your hand, or you can please put it out in the chat box. So experiential learning has its own cycle of doing it, sharing the ideas, analyzing, then find out what went wrong, what was good, and then again whatever we have analyzed we are going to apply it, and then again the cycle continues. So my dear teachers, this is a continuous cycle. Thank you, Babulji. Next. Now, how will we do experiential learning? कल क्लास में जाएंगे, मंडे कल आप क्लास में जाएंगे, कल आपको experiential learning करनी है. तो what are the methods of experiential learning? Number one, field trips. बट प्लीज रिमेंबर, मैं दोबारा दोहरा रही हूं और दोहराऊंगी कि जब भी आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, यू मस्ट हैव द प्लान. योर लर्निंग आउटकम्स, दे मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मैं फील्ड ट्रिप पे क्यों ले जा रही हूं, मैं क्या अपने बच्चों को एक्सपोजर किस चीज का मुझे देना है. आप सपोज बच्चे को ले गए, मैम फील्ड ट्रिप पे हम ले गए, कहा तो भाई जू ले गए. तो क्यों जू ले गए? आपको शेर को दिखाना, शेर के पास जाकर एक्सपीरियंस थोड़ी करना है बच्चे को कुछ, फिर तो बहुत नेगेटिव कुछ हो जाएगा. लेकिन आप बच्चे को जू ले जाना चाहते हैं, क्यों? मे बी आज मेरा पर्पस है बच्चे को जू इसलिए ले जाना क्योंकि मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हमारे जानवर इसमें रहते हैं, कैद में रहते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती है. या आप साउंड सुनाना चाहते हो जानवर का, या आप जानवर को लाइव दिखाना चाहते हो, या आप बच्चे को ये फील कराना चाहते हो कि मोर कैसा होता है, या आप बच्चे को ये दिखाना चाहते हो कि जू होता कैसा है, जू में 5 फिजिकल चीजें क्या होती हैं. व्हाट इज अ पर्पस? और भी बहुत कुछ हो सकता है. सो फील्ड ट्रिप इज वन मेथड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. नरेटिव्स, व्हाट आर नरेटिव्स? Narratives means whatever has happened. For example, you're doing a poem in your class, or you're doing a prose in your class. English, Hindi, language teachers are doing a prose in the class. Now, उस prose में कोई कोई कहानी लिखी हुई है. अब मैंने 2 बच्चों को यहाँ बुलाया और मैंने कहा चलो बेटा तुम बन जाओ राम, तुम बन जाओ श्याम, और जो भी स्टोरी में हो रहा है राम और श्याम के साथ तुम बताओ. तो they could narrate the story, or they could same way they could do the role playing also. एक राम बनेगा, एक श्याम बनेगा, राम ने जो बोला वो राम कहेगा, श्याम ने जो बोला वो श्याम कहेगा. सो तो डूइंग अ रोल प्लेइंग. तो अब बच्चा क्या करेगा? अब तक तो आप स्टोरी में राम श्याम को पढ़ रहे थे, लेकिन जब आप खुद राम और श्याम बनोगे तो आप फील करोगे, अरे उसने मुझे ऐसा कहा, अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छा मुझे वहां जाने को कहा गया. तो you can feel the real pain or the real happiness or the real feelings of Ram and Shyam. Then experiential learning can be done by conducting experiments. Ask the children to do. It's not demonstration minded, it's experiments. If the children are doing the experiment which is written in the book or the textbook, they will experience, acha, color has changed. Okay, this is the reading. Are you understanding? Simulations. Now, what are simulations? Simulation है, मान फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चे को ताजमहल आगरा तो नहीं ले जा सकते ना. इट्स नॉट दैट इजी. मे बी once a year you can take, but then you cannot do it.
सो हम क्या कर सकते हैं, हम ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं, छोटू सा मॉडल ताजमहल का बना सकते हैं, जिसमें हम वो सारी फीचर्स को इंक्लूड करेंगे जो ताजमहल में मैं पढ़ रही हूँ. So what will happen? This chotu sa model is known as a simulation. Then what about games? I tell you, we ignore games so much. But game is probably, if you ask me, my favorite, one of the best methods of experiential learning. अगर आप फील कराना चाहते हैं बच्चे को the happiness of winning. For example, there's a child in your class who is not performing. आप उसको उसका फेवरेट गेम खेलने को दो, और फिर उस गेम में अगर वो जीतता है, उसको जिताते हैं हम, मेहनत से जीते, हम जिताए उसको, काम करके जीते, खेल कर जीते, फिर आप उससे पूछो ये कैसा लग रहा तुम्हें, आई एम वेरी हैप्पी आई वन. And the same happiness you will feel if you do this work, if you do something. So जब वो happiness, achievement की happiness feel करेगा, तब वो सोचेगा यार, let me do maths also like this, let me do EVS also like this, let me do science also like this, to feel that happiness again and again and again. So this is, games do wonders with children's. Storytelling is one of the wonderful methods of experiential learning, but of course the storytelling should be done by the children. Focused imaging, matlab what? Whatever you are, suppose you're talking about a rainbow, can an image of rainbow be put there? At least if you cannot show them a rainbow just then, can an image, focused image of a rainbow be there? Nothing else. जैसे you know, अर्जुन ने कहा था मुझे सिर्फ आंखें दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है. So that focused image should be there so that the child can also focus and understand, अच्छा rainbow ऐसा होता है. Field observations, just like field trips, role playing, I've already told you, model building, making bigger models. Simulation is a sample and bigger models, and then doing surveys. जैसे मैंने आपको बताया, दो फ्रेंड हैं, वो एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दिस इज सर्वे, और इस क्वेश्चन मेथड के थ्रू उसने ग्रैटिट्यूड के बारे में सीखा, उसने वैल्यूज के बारे में सीखा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कैरिंग आउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन योर क्लासरूम. देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आप बच्चे को डेजर्ट पढ़ा रहे हो तो डेजर्ट ले जाइए, और ताजमहल पढ़ा रहे हो तो आगरा ले जाइए, ऐसा नहीं है. These things can be brought into your classroom and they can cause a ripple effect, experiential effect in your students. Okay, you can do it beautifully. It's not that every time you have to take the child out of the class और ये कहेंगे हम experiential learning कर रहे हैं. No, एक्सपीरियंस करवाना है बच्चे को. कैसे भी करा सकते हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी करा सकते हो, फॉल्स लाइफ एक्सपीरियंस भी करा सकते हो, बट द एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी दे देती हूँ. ये साइंस का एक एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स. हाउ कैन यू डू? यू हैव टू इन्वॉल्व एवरीवन. Personifying. Imagine you're flying an object and you fly from one end to another. Others will guess what flying object you are. So ये एक्सपीरियंस हो रहा है. हम बच्चे को क्या कह रहे हैं? So imagine you are a flying object, और आप एक क्लास के एक कोने से फ्लाई करके दूसरे कोने में आओगे. तो अब आप फ्लाई करो, आप क्या बनना चाहते हो? अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे फ्लाई करेगा तो बच्चे क्या कहेंगे? बर्ड. अगर बच्चा शू करके फ्लाई करेगा तो कहेंगे मैम ये तो प्लेन है. या so many other ways. अगर कोई बच्चा काइट बन जाए तो लोग कहेंगे मैम ये तो काइट है. So you are allowing the child to experience the happiness, the gift of flying. And then the children will be able to say what type of object it is. They'll be able to classify, they'll be able to conclude, they will be able to give feedback. Are you getting my point? So this is just one example for you. This is about force. Force. हम लोग फोर्स पढ़ाते हैं क्लास में. क्या कहते हैं? आप किसी चीज को धक्का देंगे, धक्का दिया. मान लीजिए उस बच्चे ने कभी किसी चीज को धक्का ही नहीं दिया, वो कैसे समझेगा धक्का? Applying force on it, applying force. Whole life we have studied force and we have not seen force. किसने देखा फोर्स को? किसने छुआ फोर्स को? किसने महसूस किया फोर्स को? इसीलिए वो हमारे टेक्स्ट बुक का एक हिस्सा बन के रह जाता है, हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बनता. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब क्या? व्हाटएवर इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक, यू मेक दैट कंटेंट अ पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ. उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए. अगर मैं बच्चों को स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा रही हूँ तो स्वामी विवेकानंद शुड बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. Then I will be able to understand Swami Vivekananda the best. Otherwise, Swami Vivekananda will remain one page in my
textbook which I have to learn and produce in the exams. Don't let that happen. So see, here is given an example that expressing motion for a paper plane. Modifying the paper plane, write a small message on it and fly it. Now read the message and speak how it made you feel. Suppose we are teaching force. हम एक छोटा सा कागज का प्लेन ही बनाते हैं, कॉपी से नहीं फाड़ेंगे, वे कागज का ही प्लेन बनाएंगे, उसमें कुछ मैसेज लिखेंगे and I'll fly it and I'll throw it towards my friend and my friend will hold it and read the message. Now what have I done? मैंने force को एक real life experience बनाया. This is how children remember things for a longer period of time. Okay. I hope you are understanding what I'm trying to do. Field trips, you can very well understand that when they go for field trips, what they observe, they are able to sustain it for a longer period of time, because field trips, observations, taking them outside gives them real exposure. Okay. So please remember this. See how the children are working in the field. So they will have a real experience of whatever they're feeling. And experiments, again, I would like to say experiment and demonstration are two different things. Many schools are only stuck to demonstrations. Let the children experiment small things. And for experiment, I never mean you have to take them to the science lab or the maths lab. You can give them so much of experience in the classroom itself. They can experience so much in their kitchens. They're at their home and learn. This is example. Theater is the best way of showing role model, defining role model, giving them the experience of role model. Okay. So the conclusion is experiences can be good or bad. We enjoy good experiences, but we feel sad about bad experiences. The problem is we do not learn anything from our experiences. The message is we should always learn from our experience, whether good or bad. Very, very important a conclusion this is, my dear friends. When a child experiences something, even if it's a death, maybe you will not give the experience in the classroom, because in the classroom we try to foster positive things more. But even if it is as bad as death, it gives us some experience. We become knowledgeable, we become the better version of ourselves only when we learn something from that experience and try to carry it forward. We do not repeat the same mistakes. Like I always tell this to my students, to my teachers, that you are free to make mistakes, you're welcome to make mistakes, but the only condition is you should not repeat your mistake. If you're repeating the same mistake again and again and again, that means you have learned nothing from your past experiences, and actually that is happening. तो अगर आप बच्चों को एक छोटे एज से ट्रेन कर सकें, उनको समझा सके, उनको फील करा सके कि भैया आप गलतियां करो लेकिन आप उसको दोहराओ मत, अपने अच्छे एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखो और अपने बुरे एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखो. That is all I have for experiential learning for you today. If you have any questions, I'll be very happy to answer them. Please put it up in the chat box. Hope you use this in your classrooms. Thank you so much. I think the link is already there. You can share your feedback and your attendance. Thank you so Any much. questions? I hope the participants would have some query. They can put in the chat box. Please, please. Thank you once again. Arivat Sahodia, thank you, dear teachers, educators, for listening to me so patiently and motivating me through the chat box throughout. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, well, as usual. So I request if some participants are there who had some questions pertaining to today's training. We still have waiting for your queries. Okay. So I don't think they have any queries. They are all appreciating. Thank you, sir. Thank you. I'll leave the meeting. Thank you so much. Thank you, everybody. We'll connect once again. Thank you.
Thank you. So all participants now, you are requested to please put in your attendance feedback up to 5:15 sharp, because the link will be automatically closed by that time. Thank you for joining. Thank you so much. Please complete your attendance during the given time.